बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट लेक्चर में हमने ये एक एग्जांपल देखी थी, दिस एग्जांपल स्टेट इक्वेशन की, और इसी को अब हम मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। इसकी हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी है। नाउ वी विल गो फॉर इम्प्लीमेंटेशन कंप्यूटर सिमुलेशन के लिए, क्योंकि बहुत से सिस्टम्स होते हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं बिफोर वी फाइनलाइज द थिंग्स, और ये ज़रूरी भी है इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप इसको कंप्यूटर में टेस्ट कर लें। सो आज का टॉपिक ये है कि हम किसी भी सिस्टम को मैटलैब में या सिमुलिंग में किस तरह से इसको सिमुलेट करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आपके पास स्टेट स्पेस मॉडल होना चाहिए। अगर आपके पास मॉडल ट्रांसफर फंक्शन में है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से इसको स्टेट स्पेस मॉडल निकाल सकते हैं। और ये जहन में रखें कि एक ही सिस्टम के बहुत मुख्तलिफ स्टेट स्पेस मॉडल्स बन सकते हैं। ये एक स्टेट स्पेस मॉडल है जिसमें ए मैट्रिक्स गिवन है आपको और बी मैट्रिक्स गिवन है। वी हैव ए मैट्रिक्स, वी हैव अ बी मैट्रिक्स, वी हैव अ सी मैट्रिक्स हियर, और डी मैट्रिक्स चूँकि वो कांस्टेंट है तो बट दिस इज कैन बी ट्रीटेड एज अ मैट्रिक्स और वेक्टर। पहला स्टेप ये है कि हमारे पास स्टेट स्पेस मॉडल होना चाहिए, या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल है तो उससे आप निकाल लें। सेकेंड इज़ कि फिर हमको इक्विलिब्रियम स्टेट्स का पता हो कि इसकी क्या क्या स्टेट्स हैं, उसके निकालने का तरीका हम देखेंगे। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स में होंगी जिनको हम सॉल्व यूज़ करेंगे एज इनिशियल कंडीशन इन सॉल्विंग ओडीई। अगर आप अपनी कैलकुलस की और मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं बीई में जो आपने की हैं, शुरू की क्लासेस को रिकॉल करें तो आपने उसमें ओडीईज वगैरह सॉल्व की हैं। तो इफ़ यू कैन रिमेंबर, तो रिकॉल करें तो आपको वहाँ पर जो इनिशियल कंडीशंस होती थी वो बहुत ज़रूरी हैं। विदाउट दैट आप फिर अदरवाइज ज़ीरो हर चीज़ को एज्यूम करके चलते हैं। इनिशियल कंडीशंस आर इम्पॉर्टेंट। देन द सेकंड पॉइंट इज़ कि इसको हम निकालेंगे कैसे, उसका तरीका ये है, दिस इज़ द मेथड कि इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। जितने भी आपके पास स्टेट डेरिवेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये दो डेरिवेटिव्स हैं, x1 डॉट है और x2 डॉट है। तो आप इन दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से, राइट, एंड देन यू सॉल्व फॉर दी स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, ये अभी हम करके देखते हैं, तो इससे हमारे पास इनिशियल कंडीशंस आ जाएंगी। सो वी विल बी डन विद द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज डन, सेकंड स्टेप इज डन। इसके बाद हम करेंगे ये कि हम एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे इंटीग्रेटर्स के अराउंड। इंटीग्रेटर का मतलब ये है कि जो एक स्टेट आपके पास यहाँ थी, इसी x1 डॉट जो है बेसिकली दिस इज द डेरिवेटिव। सो अगर ये डेरिवेटिव को अगर आप पास ऑन करते हैं दिस d अपॉन dt ऑफ x1 को, अगर आप इसको देते हैं किसी इंटीग्रेटर को, तो इंटीग्रेटर की आउटपुट पे फिर क्या आएगा, दिस विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन, सिंपल सी इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा। और जब ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा इसका मतलब है कि द आउटपुट विल बी x ऑफ t, x1 ऑफ t। तो एक तरफ आपके पास डेरिवेटिव है, दूसरी तरफ आपके पास x1 ऑफ t आ जाता है सोल्यूशन। ठीक है, तो ODEs ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ODE की जो डायनेमिक मेन इक्वेशंस हैं, और इंटीग्रेटर के बाद वी विल हैव द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि x1 ऑफ t, कि उसका क्या जो है किस तरह से मूव कर रहा है। सो इसको सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे बाय हैंड कि क्या बन रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी। सो वंस यू हैव द कॉन्सेप्ट डायग्राम, द फोर्थ थिंग विल बी टू इम्प्लीमेंट इन द सिमुलिंग। ठीक है, फिर वो मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि इसका हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स निकालने के लिए टू फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, इनको ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी कहते हैं हम। इक्विलिब्रियम नॉर्मली जो है नॉनलीनियर सिस्टम में यूज करते हैं, हम इनको ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट्स, या आप इनको इनिशियल कंडीशन का ही नाम भी दे सकते हैं। ओके, ये आपके स्टेबल पॉइंट्स होंगे।
So the first equation will be x1 dot of t equals to 0. This implies that the first equation is 2x1 minus 0.3 x2 plus minus 2 times u. Initially I will take it 0 equals to 0. So what I will have is 2x1 minus 0.3 x2 equals to 0. तो ये एक मेरे पास इक्वेशन आ गई. एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए x2 डॉट ऑफ t इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज कि मेरे पास जो x1 माइनस 8x2 विल बी इक्वल्स टू 0, राइट. ये सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. x2 को ही कंटिन्यू करता हूं. x1 इज इक्वल्स टू 8 ऑफ x2. नाउ वैल्यू substitute x1 equals to 8x2 in equation 1. So we will get 2 8x2 minus 0.3 x2 is equals to 0. 16. अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ. 16x2 minus 0.3 x2 equals to 0. Let me bring the calculator here. So this will be 16 minus 0.3, 15.7 x2 equals to 0. And by the way, x2 is equals to 0 because on the other side we don't have any constant. This will go and divide, and this will divide 0, and the answer will be x2. And now I can put this value in, let's say, equation number 2. Equation 2 को देखो तो x1 is equals to 8 times x2 is 0, and this goes to 0. This means x1 is also equals to 0. लिहाजा therefore we can take initial conditions for x1 and x2 as x1 of 0 equals to 0, x2 of 0 is equals to 0. Simple सी example थी. System already stable था, and then we are able to figure out कि इनकी क्या states होंगी. So now we have this initial states. Let's move on to the next step. और अब हमें क्या करना है? अब हमें ड्रॉ करना है ब्लॉक डायग्राम अराउंड द इंटीग्रेटर्स. इंटीग्रेटर्स के अराउंड आपको ब्लॉक डायग्राम्स को ड्रॉ करना है. ठीक है. अच्छा, इससे पहले इट्स गुड कि अगर हम एक दफ़ा फिर से इक्वेशंस को लिख लें. तो इस इक्वेशन को मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो दिस इज बेसिकली x1 डॉट इक्वल्स टू 2x1 minus 0.3 x2. ठीक है. I hope you are getting x2 is multiplied with x1, and then this plus times this is multiplied with x2 minus 2 u, और x2 dot जो है this is equals to x1 minus 8x2, right? And y also, let's complete the y equation. Y is equals to minus 2x1, because हर अभी अब सारे के सारे सिग्नल जो हैं अलग हो गए हैं, तो हम इसको वेक्टर से हटा के now we will have individual signals. So मेरे पास एक सिग्नल होगा x1, एक आपके पास आ रहा होगा x2, और एक आपके पास होगा u, and then the output will be y. तो ये चार सिग्नल हमारे पास मौजूद हैं. You will see them. और बीच में इनके मल्टीप्लायर वगैरह आएंगे. ओके. अच्छा, तो हम कंटिन्यू करते हैं with let's say I pick one integrator here somewhere. मैं छोटा सा इंटीग्रेटर बना देता हूँ 1/s. ठीक है.
1/s मैंने एक इंटीग्रेटर बना दिया, और अगर मैं एज्यूम करूं कि इसके इनपुट पे जो वैल्यू है दैट इज x1 डॉट, x1 डॉट अगर इनपुट पे है तो आउटपुट विल बी इक्वल्स टू x1। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव जनरेटेड, x1 मेरे पास आ गया, राइट। नाउ आई विल गो बैक, x1 डॉट जो है, अच्छा इसकी इसी तरह से आई नीड अनदर वन, तो मैं एक और ब्लॉक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब राइट नाउ आई डोंट नो कि किस तरह से आगे बढ़ता है, बट इट इज़ बेटर कि मैं थोड़े से फासले पे उसको बनाऊं, और देखते हैं कि सिग्नल्स किस तरह से जाते हैं। एक दफ़ा ड्रॉ करने के बाद हो सकता है यू नीड टू ड्रॉ इट अगेन, ठीक है। ये दो सिग्नल्स हो गए, ओके, एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव अनदर सिग्नल u। तो लेट्स से कि u मेरे पास एक सिग्नल है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ u, ठीक है। u के पीछे हो ऑफ कोर्स के दूसरे सिस्टम आएंगे, कंट्रोलर वगैरह आएगा, अभी हमारा नहीं, अभी हम सिस्टम मॉडल बना रहे हैं, कंट्रोलर नहीं। तो कंट्रोलर से इट मे बी कमिंग फ्रॉम, एज्यूम करें इट मे बी कमिंग फ्रॉम अ कंट्रोलर, ठीक है। कोई भी कंट्रोलर हो सकता है, पीआईडी हो सकता है, कोई पीएलसी लगा हुआ होगा, वट एवर इट इज, माइक्रो कंट्रोलर हो सकता है। खैर ये सिग्नल मुझे चाहिए था, यू मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। नाउ आई विल कंप्लीट द फर्स्ट इक्वेशन। तो x1 डॉट जो है दिस इज बेसिकली अ सम ऑफ दीज थ्री सिग्नल्स। तो तीन सिग्नल्स का सम है, एक तो ये है कि x2 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो लेट्स टेक इट फ्रॉम हेयर, इसको मैं वापस लेके आता हूँ, और यहाँ एक बॉक्स होगा, लेट्स से दिस, ये इसमें गेन मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो इसकी आउटपुट आपके पास क्या बन जाएगी 2x1। ये एक सिग्नल मेरा रेडी हो गया। इसके अलावा है x2 है -3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ से एक सिग्नल लेता हूँ, एक और बॉक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का बना देता हूँ, और इसका मल्टीप्लायर जो है वो है -0.3, and now I have the ready signal for this -0.3 x2। आप मुख्तलिफ तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। -0.3 x2, ओके। ये सिग्नल हमारे पास रेडी है, और माइनस मैंने अंदर ही इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वी नीड समर। अच्छा इसके अलावा -2, तो ये 2 जो है ये लेट्स से कि यू सिग्नल जो है ये हमारे पास आता है यहाँ से, एंड इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जगह है तो, ठीक है। ये एक बॉक्स में जाएगा, लेट्स से द बॉक्स इज मल्टीप्लायर, -2 का मल्टीप्लायर है इसके अंदर, सो द आउटपुट विल बी व्हाट, आउटपुट जो हमारे पास जनरेट होगी दैट विल बी -2u। और नाउ आई जस्ट नीड अ समर, तो मैं एक समर लेके आ जाता हूँ जिसमें प्लस प्लस और प्लस हैं, और ये एक आउटपुट होगी। द फर्स्ट सिग्नल कम्स टू हेयर, सेकंड सिग्नल कम्स टू हेयर, थर्ड सिग्नल कम्स टू हेयर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका x1 डॉट जो है वो क्या है, दिस इज द सम ऑफ 2x1, तो यहाँ से आ रहा है, और -3x2 और -2u, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज इम्प्लीमेंटेड, डन। नाउ अब हम दूसरी इक्वेशन को फोकस करते हैं, x2 डॉट जो है दिस इज बेसिकली सम ऑफ x1 -8x2। तो x2 जो है यहाँ पर सिग्नल, इसको आप पिक करें, इसको हम -8 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अब मेरे पास एक सिग्नल जनरेट हो गया जो कि है -8x2, क्योंकि ये इनपुट पे x2 था, और आई नीड x1। तो x1 के लिए आई नीड टू गो, कुछ अच्छा चले हम इसको आगे लेके जाते हैं, एंड देन आई नीड टू कम हियर, सो लेट्स टेक फ्रॉम हियर, और इस तरह से मैं क्रॉस कर लूँ इसको, ताकि ये जो एक यूज छोटा सा मैंने बनाया, दिस इज
द मीनिंग के ये कनेक्ट नहीं है। ये एक सिग्नल आपके पास आ जाएगा सीधे सीधा x1, समर हम यहाँ पे ऐड करते हैं जिसकी आउटपुट जो है x2 है, इसमें डायरेक्टली x1 आपके पास आ रहा है, दिस इज द x1 ऑल द वे टू हियर प्लस साइन के साथ, और प्लस साइन के साथ ही हमारे पास ये माइनस का 8x2। तो x2 वाली इक्वेशन भी हमने कर ली। नाउ वी आर लेफ्ट विद द थर्ड इक्वेशन y क्या है, y इज द सम ऑफ -2x1 3x2 और प्लस 5u। तो u सिग्नल अब मुझे चाहिए, तो आई विल गेट इट फ्रॉम हियर। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर लेट्स से एक 5 से, सो द सिग्नल विल बिकम 5u। नाउ द सिग्नल इज गोइंग, x2 यहाँ से आ रहा है हमारे पास, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 3 से, so we will be having this signal 3x2 here, 5u2 यहाँ से आ रहा है, 5u यहाँ से आ रहा है, और x1 यहाँ पर मौजूद है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं ओके इसके लिए हम एक मल्टीप्लाई बना लेते हैं विच इज -2। सो अब मेरे पास जो वैल्यू आई यहाँ पे -2x1, एक सिग्नल ये आ गया, और लेट्स टेक इट फ्रॉम हियर, ये प्लस साइन हियर गोस, और एक प्लस साइन यहाँ पर आ जाएगा, एंड दिस इज द थर्ड सिग्नल, एंड देन वी हैव दिस y आउटपुट, एंड वी आर आल्सो डन विद द थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन हमने इम्प्लीमेंट कर दी, और नाउ एक ब्लॉक डायग्राम मेरे लिए रेडी हो गया है। आई एम डन विद दिस थिंग, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम अराउंड इंटीग्रेटर्स। तो आपने देखा किस तरह से हमने इंटीग्रेटर्स को यूज़ करते हुए इस ब्लॉक को बनाया। द स्टेप्स वर वेरी सिंपल, आपके पास इक्वेशंस थी, उन इक्वेशंस के बाद आपने इंटीग्रेटर्स यूज़ किए 1/s, और उसके अराउंड ही हमने पूरा का पूरा सिस्टम जो है डेवलप किया। इनपुट पे आप हमेशा x डॉट यूज़ करेंगे, आउटपुट आपके पास x होगी, एंड देन वी यूज़ बॉक्सेस फॉर एज अ मल्टीप्लायर। ठीक है, आप मल्टीप्लायर यूज़ कर सकते हैं बॉक्सेस के अंदर। k इज़ वैल्यू, k जो है कहीं पे 5 है, -8 है, -0.3 है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। और इसके बाद तीसरा एलिमेंट जो हमने यूज़ किया दैट वाज द समिंग पॉइंट। ठीक है, जिसकी मल्टीपल इनपुट्स हो सकती हैं, प्लस माइनस साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं, एंड इट हैज़ द आउटपुट, राइट। नाउ वंस वी आर डन विद दिस थिंग, अब हम जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सिमुलिंक के अंदर। ठीक है, और फिर हम सिमुलेट करके देखेंगे। सो ये सिमुलिंक की विंडो है, और लेट मी स्टार्ट विद द ब्लैंक मॉडल। बाय द वे आप इसमें से हम इसको पैरेलल में रख लेते हैं ताकि वी कैन हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट। और द बेस्ट थिंग कैन बी दिस थिंग कि हम इसको स्नैप लें और नोट में ले जाएं like this. I just need this portion. Okay, Simulink is here, and I prefer to go to OneNote. We can continue with this, no problem. Okay, अब हम इसके अंदर नया मॉडल बनाते हैं, ब्लैंक मॉडल। Yeah, it is the blank model here already. Or what I need is full screen करना है, and then I need simulation, browse the library. Browse the library. Here, where is the library now? अच्छा, हम देख लेते हैं हमें कितनों की ज़रूरत है। We need
2 इंटीग्रेटर्स 1/s, ठीक है। 2 इंटीग्रेटर्स हमें चाहिए सबसे पहले तो। Okay, so let's do it here. So what we need is integrator. इंटीग्रेटर राइट साइड पे आप देखें तो यहाँ पर लेट मी शो यू, इसमें बहुत ढेर सारे आपके पूरे सिमलिंक के टूल बॉक्सेस वगैरह अवेलेबल हैं, बट वी नीड वेरी सिंपल। सिमलिंक में जाएं, इसके मुकम्मल यूज ब्लॉक्स हैं, इसमें अगर आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द इंटीग्रेटर, ये हमें चाहिए होंगे तकरीबन 2। इसके अलावा वी नीड गेन, ये हमें चाहिए होंगे काफ़ी ढेर सारे, मल्टीपल चाहिए। इसके अलावा वी नीड दिस सम पॉइंट, ठीक है। इन 3 के अलावा आई डोंट थिंक सो वी नीड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट स्कोप्स। तो लेट्स टेक देम and right click and add to the model. One is being sent there, एक हम यहाँ से भी ले जाते हैं, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि वो वहाँ पे आ गया है कि नहीं। yes, it is here. So what I am going to do here is कि अब मैं एक एक करके देखता हूँ। गेन के ब्लॉक्स अगर मैं काउंट करूँ तो कितने हैं? अच्छा, इंटीग्रेटर्स पहले हम भेज देते हैं। इंटीग्रेटर एक चला गया और आई कैन सेंड अनदर वन। राइट क्लिक, add to the model block, and I should इंटीग्रेटर इसी के ऊपर आ गया एक और, ठीक है। 1 and 2 integrators are here. Let's just replicate it. इसके अलावा हमें गेन चाहिए, तो गेन जो है where is that gain? Here. How many gain? Let's count them. 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, so 7 gain we are going to send to here. Control I. Now I will use the keyboard. Control I. 2 3 4 5 6 7. Very simple. ये एक ही जगह पे आ गए हैं, आप हटाते जाएंगे तो यू विल फाइंड ये एक आपके पास आ गया। इसको राइट क्लिक कीजिए और रोटेट। फ्लिप द ब्लॉक इज बेटर कि आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ये क्लिक हो गया, एंड यू कैन डबल क्लिक मेक इट 2। इसके अलावा एक और आपके पास है दैट विल कम समवेयर हियर, ओके। इट इज -2, ओके। मैंने डबल क्लिक किया और ये -2, ओके। Then we have another one somewhere here, और इसको हम रोटेट करवा सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, राइट, नाइस। अच्छा, यहाँ पे ओके, सो दिस व्हाट वी आर डन विद। इसके अलावा एक और गेन ब्लॉक है जो कि यहाँ पर मौजूद है 1/s के आगे, इसकी वैल्यू है 3। And then we have another block somewhere here which is flipped कर दें इसको हम, और where is it, flip here, इसमें है वैल्यू -8, double click करें, and then we have another block below that 5, right, and then this is the only one, ये लास्ट होगा, ये लास्ट, ठीक है। इसको हम फ्लिप करते हैं and this will take the value -0.3, ओके। इसके अलावा फिर हम लेके आते हैं समर्स,
one more thing, we need the input signal. So let's take an input signal as well. आप कांस्टेंट भी ले सकते हैं, आप स्टेप भी ले सकते हैं. There should be some steps here. Where is the step signal here? अच्छा, the signals will be in, ये signals जो हैं ये आपके पास होंगे source में. अगर हम गौर से देखें तो आपके पास source और sinks, sources के अंदर हमारे पास signal मौजूद हैं. आप देख सकते हैं band limited noise है, chirp signal है, constant clock. आप फाइल से भी इनपुट ले सकते हैं. So I'm looking for a very simple step. ये step आपके पास आ गया. This step is basically my U input. ठीक है, ये आपके पास U signal है. And what else I need is syncing. Sync signals में आपके पास scopes आएंगे, और we can have a single scope as Y output. ठीक है, और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, we will see कि इसमें अभी हम क्या करेंगे. डबल क्लिक किया इसको आपने, और now you are going to have the option settings. In the settings we can define the number of input ports. Let's make them 3, 2 for the states and 1 for the output. And even you can make it 4 by the way, जिसमें आप इसको input को भी include कर सकते हैं. Okay, so let's close it right now. We have a big scope. Okay, okay. इसके अलावा समर्स हमें कितने चाहिए? 1 समर, 2 समर एंड 3. 3 समर हमें चाहिए. समर को हम देखते हैं कंटिन्यूस में. समर्स विल माइट बी इन द सिग्नल राउटिंग. सिग्नल राउटिंग में बस है, स्विचेस हैं, मैनुअल स्विचेस हैं, and this will be in the signal attributes. Ports and systems might have it. Summer, where are you? Summer. Let's go to the commonly used block. Must have it. I think it will be in the maths operations, right? यहाँ पे मिल जाएगा, ये सब मिल गया. ये वैसे maths operation में होना चाहिए. Maths operation में, like this is the adder here, and gain is also there. आपको एक ही ब्लॉक जो है वो मुख्तलिफ appropriate places पे भी आएगा, commonly used blocks के अंदर भी आएगा. So let's come and finish it. Sum को 3 चाहिए हमें. Right click at 1, 2, 3. ड्रैग एंड ड्रॉप की ज़रूरत नहीं है बार बार, आपके पास ऑटोमेटिकली एक ही प्लेस पे रेप्लिका हो जाएंगे. नाउ अच्छा, इसको डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो आई हैव एन ऑप्शन साइंस की, तो आई विल हैव प्लस हियर. ये 3 आपके पास आ गए. एंड आई थिंक व्हाट आई कैन डू इज दिस. ओके, सो 3 समर आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे. लेट मी सी. Yeah, 3 summers, 1 summer is here. Replica. और एक और, let me just put them properly. एक summer आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इसको भी डबल क्लिक करें, आई को, ये जो, and then remove this and add plus. So this will be 3. और यहाँ पर आपके पास 2 चाहिए इसके इनपुट, right? So I think I'm done with all of it. अब हम शुरू करते हैं कनेक्शन. कनेक्शंस को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले U को मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये दिस इज -2, दिस इज -2. इसके अलावा and -2 signal goes here. This is connected here from top side. और अच्छा, आप अगर इसको सेलेक्ट करके and you press a control and keep it there, और उसके बाद सेकंड ब्लॉक को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली
कनेक्ट होता जाएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से हाँ, यहाँ से आपको ओके नाउ आई नीड एक्स, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है कि अगर आपको इसको कनेक्ट करना है तो इन ब्रांच, तो यू हैव टू गो इन द रिवर्स, राइट, और व्हेन यू सी अ डॉट देन यू कैन लीव इट। इसी तरीके से अगर मैं कनेक्ट करूँ यहाँ समर से आउटपुट, दिस इज डन, दिस इज डन, क्लिक क्लिक क्लिक, सॉरी। अच्छा, अब ये यहाँ से मुझे x2, यहाँ पे आपके पास देखें तो यहाँ पे आपके पास x2 मौजूद है, जबकि यहाँ पे आपके पास जो है x2 डॉट है, ठीक है। x2 और डॉट लिख देता हूँ मैं, ओके। सो x2 underscore dot is here and we have x2 at this output। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास x1 is dot here और ये सिर्फ आपके पास x1 है, ओके। So we have x1 here and then x1 dot x2 is here। This is what from reverse, यहाँ से 0.3 से पिक करें, वापस आएं and then this is x2 is connected, x minus x3 से मल्टीप्लाई, okay, this goes here। ये इक्वेशन कंप्लीट हो गई। नीचे अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो we have ये u सिग्नल जो है it is going directly to 5, यहाँ से रिवर्स में लेके जाते हैं and कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। This is the u signal, u signal। It's interesting। Okay, u only u, not u delay, I'm just giving it a value, let me give step time। अच्छा, इसके स्टेप को मैं अभी कर देता हूँ इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू 0, सो दिस विल बी अ 0 वैल्यू फॉर ऑल, राइट। अच्छा, नाउ ये जो है ये कहाँ से आ रहा है x1, तो x1 चाहिए मुझे, तो आई विल गो बैक, फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर मैं इसको इससे कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। सो दिस इज हाउ आई एम डन विद दिस। x1 यहाँ से कनेक्ट, x2 इक्वेशन ये कंप्लीट हुई एंड देन आई हैव 5 कंप्लीट हो गया। अब मैं करता ये हूँ कि आई नीड टू कनेक्ट these वैल्यूज। तो सबसे पहले तो मुझे एक स्टेट पता करनी है, ये x1 है, या बल्कि हम यूँ करते हैं इसको डिलीट करते हैं और टॉप वाला जो है वो मैं लेके आता हूँ आपका ये वाला सिग्नल, इनपुट सिग्नल, ठीक है। कमांड सिग्नल विल बी द फर्स्ट वन। उसके बाद द लॉजिक गोज लाइक दिस, कमांड सिग्नल आपके पास आ गया, यू सिग्नल, फिर आपके पास x1 आना चाहिए, सो आई विल टेक x1 हेयर। सेकेंड आपके पास x2 आना चाहिए, तो डायरेक्टली x2 हेयर, और थर्ड आपके पास आना चाहिए आउटपुट, सो द आउटपुट विल बी दिस वन, राइट। And let me take it from here to this side, ठीक है, नाइस, ओके। अब एक और चीज़, अगर हम वापस जाएं तो हमने क्या किया था, हमने इनिशियल कंडीशंस दी थी। इंटीग्रेटर जो हैं उसमें इनिशियल कंडीशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गो बैक हियर, यहाँ पर, और आई वुड लाइक टू ऐड इन इम्प्लीमेंटेशन के don't forget to put the initial conditions into the integrator blocks। integrator block कौन से वाले, 1/s वाले, and this is done by double clicking। तो आप डबल क्लिक करें, वापस जाते हैं हम अपने
मैटलैब में here, ओके और इसको अब मैं डबल क्लिक करता हूँ। यू कैन सी कि जब आपने डबल क्लिक किया तो आपके पास एक ऑप्शन है इनिशियल कंडीशंस, लकली इट इज़ 0, यही हमने भी कैलकुलेट किया था। ओके द सेकंड इज x2 भी 0 था, इट इज 0 here, ओके नाइस फाइन। सो नाउ व्हेन आई विल रन इट यू विल सी, इसको रन करें and let's observe now it is compiling, evaluating, compiling, पूरा सिस्टम जो है उसके इंटीग्रेटर्स वगैरह, now it's running and terminated. So by default around 10 seconds के लिए इसने simulate किया of course. So you see everything is on 0 right now. अब अगर मैं इसको now we can observe the some different values. अब मैं अगर इसको देता हूँ step after final value is 1 and I'm going to give the step after 5 seconds. अब इसको हम रन करते हैं and let's see what we are going to get here. तो अब जो हमने देखा है इसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास we have a step after 5 and this is the result for it. Let's make it clear. स्कोप को हम ऐसा करते हैं इंडिविजुअली अलग कर लेते हैं, ठीक है। सो स्कोप को मैं अलग कर लेता हूँ and this scope will be having only one. ठीक है, ये 1 मैंने इसको कर दिया है, इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। दिस इज फर्स्ट स्कोप और इस स्कोप को चाहूँ तो मैं यहीं करीब कर दूँ, ये यू सिग्नल है। इसके अलावा फिर एक और स्कोप में लेके इसी स्कोप की कॉपी भी आप ले सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी बन जाएगी, स्कोप 2 बन गया और इससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ x2 को एंड आई थिंक x1 और x2 को हम एक साथ कर लेते हैं। इसको 2 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, आउटपुट को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इस स्कोप में हमारे पास 2 आएंगी एंड दिस सेकेंड वन विल बी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी डिलीट कर देते हैं एंड दिस विल बी x1 एंड x2। इसके अलावा ये सिर्फ y एक सिंगल हम छोड़, इसको सिंगल के ऊपर ले आते हैं, इसको 1 कर दीजिए, ओके एंड लेट्स कनेक्ट दिस, राइट। अब ये आपके पास ये भी कनेक्ट हो गया। सो वी हैव दिस, इसको डबल क्लिक करते हैं एंड देन वी हैव इट, ओके। सो व्हेन आई रन इट 1 2 एंड 3, इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं, स्मॉलर, don't want to close it but just yeah, this is our output. All right, which is smaller, and then we will have ठीक है, just make it like this, okay. Bismillah, let's do it again. Yeah, good. So this now is now better. In fact, last एक स्कोप में जब रखेंगे तो प्रॉब्लम कम्स लाइक दिस के जो मैग्नीट्यूड हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वी आर अनएबल टू ऑब्जर्व व्हाट्स हैपनिंग। ये आपने देखा कि ये जो स्टेप आपके पास आया है इट इज़ 5। सो फर्स्ट लेट मी प्ले विद दिस स्टेप। स्टेप को अगर मैं कहूँ कि स्टार्ट एट लेट्स से 0 एंड देन आई रन इट, तो ये आपने देखा 0 मीन्स ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट विल बी 1। और अगर मैं स्टेप को कहता हूँ कि आफ्टर सम डिले लेट्स से आफ्टर 3 seconds, सो अप्लाई एंड सिमुलेट,
और फिर आप देखते हैं कि ये 1 सेकेंड पे भी 0 है, 2 पे 0, 1 2 3 और उसके बाद 3 के ऊपर ये 4 1 इसका यूनिट आ गया, 1 यूनिट स्टेप एंड दिस इज़ व्हाट वी सी। अच्छा, अगर मैं इसको कर देता हूँ, मैं अप्लाई 0 ही करता हूँ, यानी देयर इज 0 इनपुट सिग्नल। इन केस ऑफ अ 0 इनपुट सिग्नल, व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, correct, you are going to observe the initial condition, right, this one. Now I haven't checked that whether this system is stable or not, उसको हमें देखना होगा। और अच्छा, यहाँ पर अब दिस इज द जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन को मैं नॉन जीरो कर देता हूँ, लेट्स से कि मैं कर देता हूँ इसको 1। नाउ आई वांट टू ऑब्जर्व कि x जो है वो 1 पे है और d को मैं दे रहा हूँ 1, तो लेट्स सी कि जीरो इनपुट पे इनिशियल कंडीशन का रिस्पॉन्स क्या होगा। सी दिस इज अनस्टेबल, इसको मैं वापस 0 पे ले आता हूँ, ओके, x1 की, एंड देन आई गो फॉर द x2, इसकी इनिशियल कंडीशन 1 कर देता हूँ और इनपुट भी 0 है, सिर्फ इनिशियल कंडीशन x2 की है। यू सी दिस सिस्टम इज स्टिल अनस्टेबल, सो दिस इज अन अनस्टेबल सिस्टम फॉर श्योर, ओके। इसको हम 0 पे कर देते हैं एंड वी नीड अ कंट्रोलर जो कि इसको सिस्टम को स्टेबलाइज रखे, राइट। सो right now is everything is on 0 because initial states are all zeros and the input is also 0, okay। so this is the this is how आप किसी भी उसको simulate कर सकते हैं। and next lecture I will show you how we can think of a controller, feedback controller, uh, linearization and feedback controller, okay। So if you have any questions, please let me know. Thank you very much.